आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हम आज कुछ डिस्कस करेंगे अबाउट कंप्यूटर। सो हम सोच रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर और बाकी मशीन्स में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज ए मशीन, व्हाट इज ए कंप्यूटर एंड हाउ कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम ए मशीन। सो इफ यू थिंक ऑफ ए मशीन, व्हाट इज ए मशीन? Machine is a combination of parts, you can say, and these parts communicate with each other. So let's say it's we just think about car. What is car? It's a collection of components, or you can say spare parts, which communicate with each others. Your steering communicate with your pedals, and your engine shaft communicate with your wheels. It tries to rotate them. But in the same way, like these machine are, whether it's a car, whether it's any machine, it's a printing machine, anything, it's an electric fan or anything, computer is also a machine. But it differs in some aspects than other machines. So same way, like other machine communicate, computer also have different components. They communicate with each other, and how they communicate may be difference. Like if it's a physical machine, if it is two motor, if it is a motor have to rotate a wheel, we can use pulley system, we can use any other of a chain system where it can give power to rotate that wheel. So in case of computer, also we want to communicate. So let's discuss different component of the computer. You must have all computers in your homes, or not. If not, then I will request that at least you should buy some basic computers. Uh, if you are interested in learning this tech stacks, so that is very necessary, because until you don't see computers, you will not be familiar with things. You know the f- the first thing to learn anything is to get involved in it. You have to be involved. आपको उसमें involved होना पड़ेगा. You will get learn automatically once you get involved. Like we never have to like work hard to learn our mother tongue, right? हम हमारी जो मातृ भाषा होती है वो हम अपने आप सीख जाते हैं, हम उसे सिखाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इंग्लिश को सीखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। हम उस इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं जहाँ पे ऑल टाइम्स इंग्लिश हमें बोली जाए, हम सारा काम इंग्लिश में करें। तो ऐसे ही है कि अगर आपको कुछ चीज़ सीखना है तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप सुबह उठोगे तो आपके मन में थिंकिंग आनी चाहिए कि मेरे को ये सीखना है। डेडिकेशन बहुत नेसेसरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। सो so let's talk about different part of this computer machines, you can say. So uh, for learning anything, you can just use any internet sites, or like uh, and I will recommend like you just rely on Wikipedia or some reference document only, because they have good knowledge. So let's say I will say what is computer. Okay, I will just type this, what is computer. You will get a lot of literature about it. Okay, so let's open this picture only and we will talk about it. So you see, uh, they have shown different component of this computer. They all are part of this computer. So you see that this is your display, this is your keyboard. You spell it keyboard. These are your sound devices. This is your cabinet, and inside the cabinet there are a lot of other smaller computer components you can talk about. One is memory device, you can say. One is hardware, you can say. There are a lot of port that you can say. There are a lot of
other smaller component which you need to be learn when you gradually involve in these tutorials. So so you see that they are the component. And why these component? uh, the keyboard, let's talk about keyboard. You have seen this, like it's an input device. What do you mean by input device? So let's think of a human anatomy and how we relate human to the computer. So हम आदमी हम जैसे इंसान हैं, हम इनपुट कहाँ से लेते हैं? मतलब हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जानी है, किसी ने कोई हमें आवाज़ लगा रहा है, हमें कोई काम बता रहा है, तो हम कहाँ से वो इंस्ट्रक्शन लेते हैं? या तो हम आंखों से देखते हैं या फिर कानों से सुनते हैं, राइट? सेम वे, अगर आपको कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना है या भी किसी भी मशीन को कोई इंस्ट्रक्शन देना है, चाहे हमें फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ टच करते हैं, वो उस पे एक्शन होता है, हम फ्यूल डलवाने जाते हैं, वो दो तीन बटन प्रेस करते हैं, उसके बेस पे उस मशीन को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि इसको इतना फ्यूल डालना है, इस रेट के हिसाब से इसको इतना लीटर फ्यूल जाना चाहिए। वो उस नोजल का वॉल्यूम चेक करता है, उस बेस पे उसको उतना डीजल देता है। तो हर किसी भी मशीन को कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए, मतलब वो वर्क करेगा ना। मशीन किस लिए? कुछ काम करने के लिए। काम काम क्या करेगी? हम उसको कुछ इनपुट देंगे, राइट? यहाँ पे दिखाया इसने, बंदे ने एक ट्यूटोरियल लिखा है कि दिस, ये देखो इनपुट। और इनपुट को कोई भी मशीन है, कंप्यूटर है, वो क्या करेगा? बाद में कुछ प्रोसेस करेगा, उस इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा और कुछ आउटपुट देगा। सो प्रोसेसिंग पार्ट होगा उसका कुछ, और कुछ बाद में वो काम करके आउटपुट देगा। जैसे हमें भी कुछ काम करने के लिए बोला गया कि हम हमें होमवर्क करना है, हमें इंस्ट्रक्शन दी गई, हमने अपनी नोटबुक निकाली, होमवर्क की इंस्ट्रक्शन देखी, हमने होमवर्क किया और फाइनली वो होमवर्क हमारी नोटबुक में आ गया। दैट इज ए आउटपुट। सेम वे कोई मशीन है, कुछ कुछ भी है, हमें एक प्रिंटिंग मशीन है, हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें ये वाला पेज है, इसको प्रिंट करना है, उसको हम पेपर सप्लाई करते हैं, उसको और जो भी इनपुट या प्री स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट चाहिए हम उसको देते हैं, and after that it prints and result is then after processing. So uh, so that is cool. So thing is how this keyboard communicate with the computer. Like it's a, you see that it's a buttons only, right? And even this is the mouse, right? It can be, it's just a pointing device. You see that this cursor is rotating, and it's because of mouse. Like you don't have to use keyboard all the time, you can go to any part of your screen. And I will explain like how I decided like where to go. If you click on tab, what is to be action taken, but that later on these tutorials. So guys, uh, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू है। आप इसको पढ़ सकते हो बेसिक्स बुक्स में, मतलब ज़्यादा डिटेल्स में जाने की बजाय। और आपको कुछ क्वेश्चन हो इस पे, तो आप पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। उस चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, वी विल वर्क ऑन दैट। ओके। सो मैं एक थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि कम्युनिकेशन कैसे होता है कंप्यूटर्स में। सो यू नो, every machine or every anything, say, whether it is human or any machines, they work on instructions. And instruction is what? Instruction is nothing, it's a command. और कमांड हमें किस में मिलती है? किसी न किसी लैंग्वेज में मिलती है। लाइक हम हिंदी में, ह्यूमन है वो हिंदी में भी हिंदी भाषा सीखता है, इंग्लिश सीखता है, और भी मदर टंग्स हैं, मतलब कुछ भी सीख सकता है। उसको जो उसको आती होगा उसमें इंस्ट्रक्शन वो समझ जाएगा। तो सेम वे कंप्यूटर में भी लैंग्वेजेस होती हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज, कि भाषा है क्या एक्चुअली में, और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। सो आपने सबने पढ़ा है आई थिंक बेसिकली कि भाषा कुछ नहीं है, इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ
combination of a vocabulary and some rules, you can say. So every language has some words and a protocol in which these words can be arranged, right? So let's say you talk about Hindi, right? So हिंदी में क्या होता है कि पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर वर्ब और फिर कर्ता, क्रिया और कर्म, राइट? ये सीक्वेंस होता है। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है, राइट? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, राइट? सो ऐसे ही हर लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड होते हैं जो उस लैंग्वेज में स्पेसिफिक होते हैं, राइट? वी से दैट 11, 11 is what? 11 is a keyword in English, which means like letter 11, right? It this 11 keyword is not present anywhere else. It's in English. हिंदी में क्या है उसका equivalent? 11, right? So same way in every language there are keywords. You can say vocabulary of that language and the way to arrange those to create to create a sentence. And sentence is what? It's a command. It's instruction. सेम वे कंप्यूटर में भी कीवर्ड्स को और उनके रूल्स को अरेंज करके कुछ कमांड दी जाते हैं कंप्यूटर्स को. यू से दैट आई वांट टू टर्न ऑफ दिस कंप्यूटर, राइट? सो व्हाट यू डू, लेट्स you want to shut down this computer, any computer. So what you do, you just push the power button. Then what happen? Power button has encoded some instructions, like whenever this button will be pressed, you need to send a computer a command, and computer should understand that command, that I need to go to shut down now. And he then disconnect all his component. He cut the switches of all the power, and it goes to sleep mode. You just say that I want to close this program. Okay, so you just click on cross icon. Then there goes an instruction to command that refresh this particular display window to not show this tab on this application. This application is nothing, it's a browser applications. Okay, so that's about how they communicate. We will talk more in details, like what are the applications, how the application are built on, how computer have graphic built of. So all these section will be covered. So आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट? सो हमने अभी पढ़ा कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, राइट? व्हाट इज मशीन and how it is different from computer, communications between different computer component, right? uh, what is language, uh, okay. So we can explore more in the coming sessions. Like I think we should be starting with the uh, understanding of the computer operating system, and then various computer applications. So that should be the part of our next session, I think. Uh, so for this one, right? You said uh, so computer operating system. So what is computer operating systems? If you have seen, so every machine can can have a operating system. The same way computer will have some operating system. We will discuss in next sections. So
That's okay, I think, as of these sessions. Thank you. Thank you. Please keep sharing so that this channel get reached to more people who need this. Thank you.